Thank you very much, ma'am, for giving a very warm welcome and providing me this great opportunity to be the part of this August gathering, and especially, the youth uh, who are uh, just a minute. Yes, who are responsible for taking the country forward. So especially when I get the opportunity to interact with the young minds and the teachers who are very committed for contributing to the highest of the academics and for the betterment of the society at large. So this is really a great opportunity. I feel very happy and honored to be the part of this great academic exercise. So today, the topic which I have taken up for discussion, it's not about, delivering a talk because we all are sitting in the same boat, we all are teacher. And only the difference is that there may be a possibility that there may be few young teachers who may have joined recently or maybe, 4 or 5 years back. But we all are very committed to make the society better and to uplift the standard, uplift the level of our youngsters who are having bright minds. So when we talk about tax planning, so three things basically comes to our minds: tax planning, tax evasion, and tax avoidance. So today I'll be delivering less, but I'll be interacting more because you all are intellectuals and you all are, under the ambit of taxations because you have to file your return and you have to come across so many issues while filing the return at the end of the financial year. So therefore, keeping in view the issues which generally arises and which generally crop up in the mind of the taxpayer while filing the tax returns. So all those issues we are going to discuss and deliberate in a very, positive spirit and in a very proactive manner. So, well, friends, let be very clear about tax planning, tax evasion, and tax avoidance. So, you all might be knowing about various deductions. Then I'll again, explain why, we are taking up and why we are so keen to have a discussion and deliberation on these various deductions, rebates and relief and the exemptions, so on and so forth. Because under new regime, all these deductions, rebates, relief, exemptions have been withdrawn. But that does not mean that if these deductions, rebate, reliefs are not available, we should not, understand the nitty-gritty of the tax planning, tax avoidance, and tax evasion. So let me be very clear about tax planning first. So you all are, very confident that whenever we take and whenever we use any, deduction in a legitimate way to minimize our tax planning or the income of individual is structured or designed in such a way where we are able to claim the tax benefits under various deductions, exemptions, rebates, and relief. So under, the act of income tax
So presently it is Income Tax Act 1961. We all know the various deductions which are claimed by the individual while filing the income tax return. Say if I am claiming the deduction, say for example, under section 24, if I have bought a house and or if I have constructed a house or if I have renovated a house, and for that very purpose, if I have taken a loan from any financial institution and if I am paying the interest on that, so in that case, up to rupees 2 lakh, the individual is eligible to claim the deduction under section 24 in respect of the interest on loan taken either for the construction or for the buying or for the renovation of the house. Say, for example, if I am claiming any deductions under section 80C, where I have invested my funds in any investment avenues which is prescribed by the government of India. Say, for example, if I am, investing my funds in life insurance corporation for taking any policy in respect of ensuring the life. So for that purpose, if any amount of premium is being paid by me to the life insurance corporation, in that case, I am eligible to claim the deductions under section 80C, and maximum the deduction which I can claim or the individual can claim under section 80C is 1.5 lakh in a particular financial year. So this is what, the tax planning is all about. Now the question arises, what is tax avoidance? So when any tax advantage or if any tax benefit is taken legally or within the four wall of the law, any deduction, rebate, relief, exemption, which is provided under Income Tax Act and thereby reduce the taxable income comes under tax planning. And now the question arises that what actually the tax avoidance is all about. I tell you, say for example, we are the salaried person, we are working in the government sector or we are working in the corporate sector. The very thin line between these two, tax planning and tax avoidance, is that both are legal. Tax planning is legal, tax avoidance is also legal, but tax avoidance is unethical. When we talk about that, everything must take place in letter and spirit. So here the first word letter is there, but spirit is somewhere missing. So when the spirit is not positive, when the intent is not positive, and if we claim any deduction while having any, malified intention, or when the intent is not positive, is termed as tax avoidance. Say, for example, the employer has given me a loan of rupees 50 lakh, right? So instead of, enhancing my salary, instead of giving me, allowances or perquisites, which are generally attached to the position, what understanding myself and my employer developed is that the employer provided me a loan of rupees 50 lakh, and we have a clear understanding. It means the clear understanding between the employer and employees that this amount of rupees 50 lakh will not at all be repaid by the employee to the employer in the time to come. And when at a particular point of time, when
the due date comes or when the employer exempt the employees or ask him, okay, you are not required to repay this loan of rupees 50 lakh. It means the employer is extending the financial benefits to the employee indirectly. Instead of providing this much of benefits by way of providing requisites, by way of providing regular allowances, then of course the employee is entitled to make the payment of tax on such benefits, on such allowances, on such requisites as well. But here the intent is not positive. Employer and employee entered into an understanding that, okay, instead of doing this, better it is that I give you a loan of rupees 50 lakh, and after 5-10 years, without any logical background or without any clear or positive intent, I will ask you not to make the repayment of the loan. So this is something which comes under the purview of tax avoidance. So here, it is legal. It is done in order to minimize the tax liabilities, but the intent is not, clear. Intent is not positive. So if anything takes place where the spirit is missing, where, the tax advantage is sought, or where the tax advantage is granted or tax advantage is claimed by the individual, taking the advantage of loopholes which are available under the Income Tax Act 1961. So here the tax avoidance is done keeping in view the loopholes which are available under the Income Tax Act. इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई किसी प्रोविजन को, किसी सेक्शंस को, किसी सब सेक्शन को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं. सिंपली द loopholes which are available, we are planning, we are structuring our income in such a way that maximum advantage can be extracted simply by taking the advantages of loopholes which are available under the Income Tax Act 1961. The one example of loan I had explained you. Now the second situations I tell you as far as the tax avoidance is concerned. Every individual is entitled to claim the deduction under Section 24 in respect of interest on loan taken either for the construction or for the buying or for the renovation of the house. So here it is mandatory that the loan must be taken, or these transactions must have taken place in a legitimate way. It means दो नंबर का ट्रांजैक्शंस नहीं होना है, एक नंबर में ही इसकी एंट्री होनी है. What I did is that I had a very good understanding with my spouse. मैंने अपनी स्पाउस से 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, और 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और वो थ्रू चेक लिया मैंने. तो वो आपका ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेजिटिमेट है. नथिंग इज गोइंग टू कंसील, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. और उस 50 लाख रुपए के लोन के ऊपर हमारा एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट भी बनवा लिया. उस 50 लाख रुपए के लोन के ऊपर 10% जो है मेरे को इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर अपनी स्पाउस को. 5 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए हर साल मुझे लोन देना है. अब एक्चुअल में मैं जो है अपने स्पाउस को 5 लाख रुपए का लोन नहीं, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूं, या मैं 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट उनको पे कर रहा हूं और उनको एक नंबर से ही कर रहा हूं, चेक से ही कर रहा हूं. बिकॉज आई नो that the total income of my spouse
in a financial year does not exceeds rupees 12 lakh, or if she is working, if she is a salaried class, then up to 12.75 lakhs. If her incomes are restricted up to 12.75 lakhs, in that case, no individual is liable to pay the tax on such income up to rupees 12.75 lakh. So here, by taking a loan from my spouse and paying the interest on such loan, so I am paying rupees 5 lakh as interest to my spouse. And in case if she does not have any other source of income, or we can presume that she may be having other source of income, but in totality, her income in a financial year does not exceeds 12.75 lakhs. So her tax liability will be nil. So she is not paying even a single penny as a tax liability to the government. And I have also escaped myself in respect of paying the tax liabilities to the government, because I have claimed rupees, 2 lakhs as a deduction under section 24 in respect of interest on loan taken either for renovation, buying or construction of the house. So both the way we are, trying to minimize our tax liabilities, and everything is legitimate. Neither my spouse nor myself, we are not violating any rules and regulation under the Income Tax Act 1961. But despite the fact, we both are eligible and we both are taking maximum advantage of minimizing our tax liabilities simply by developing an understanding that, okay, instead of taking the loan from the financial institution, so better it is that I take the loan from you. I will make the payment of interest to you, since you do not have any other source of income, or if you have any other source of income, in totality, the income of my spouse does not cross or does not exceeds 12.75 lakh. So in that case, she is not paying even a single penny as a tax liability to the government. And I am also uh, able to reduce my tax liabilities to the extent of the amount of interest which I have paid to my spouse, subject to a limit of rupees 2 lakh in a financial year. तो 2 लाख रुपए तक मैंने अपनी इनकम को रिड्यूस कर लिया, एंड इफ आई एम इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, तो 2 लाख का 30% सीधा 60,000 रुपए जो है मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटीज मैंने मिनिमाइज कर ली. और उधर से, बिकॉज I was pretty sure we both have an understanding that in any case the income of my spouse will not exceed 12.75 lakh. So 12.5-13 लाख रुपए तक अगर मेरी स्पाउस की इनकम होती है इस तरह एडजस्टमेंट करने से, तो माई स्पाउस इज ऑल्सो नॉट पेइंग tax liability to the government, and I am also able to minimize my tax liabilities to the extent of the amount of interest which I have paid to my spouse. So this is, another example of tax avoidance. Now, the third aspect, tax evasion. So it's very simple, and you all might be, very confident and might be knowing about the concept of tax evasion. Anything which we evade illegally, where the rules and regulations, the sections, the subsections, if they are violated only for minimizing the tax liabilities. So by using colorable devices, if I structures my income in such a way which invites minimum tax liabilities, or if I
designed my income in such a way which attracts minimum tax liabilities, where I am violating all rules and regulations of Income Tax Act 1961. This is what we call tax evasion. Say, for example, if uh, I am uh, you know running a business. So here, you know, I have two sort of business. I have textile business. I have a chemical business. So here, what I am doing is that I have started two business with an intention to minimize the tax liabilities just by manipulating the incomes. So if any income which has taken place on account of textile business, and what I am doing is that I know that from textile I am earning huge. There is, a highest level of income as far as my textile business is concerned. But on the other hand, if my chemical business is not doing well, so in that case, if any expenses or loss that has taken place on account of uh, chemical business, so if that amount of loss or that amount of expenditure which I have done for chemical business, and if I reflect those sort of expenses and losses in the income statement of my textile business, and thereby reducing the tax liabilities. So this is something which is not expected, and I am deliberately doing it because I know that they are, in chemical business, I am running under loss. So if I am running under loss, I am already, escaped from paying the tax liabilities, because tax is always paid on income, not on the losses. And the expenditures and the carry forward losses which I have kept for my chemical business, if I am reporting those expenses and losses into my into my textile business, and thereby I am reducing the taxable income, keeping in view to minimize the tax liabilities. So this is all what tax evasion is all about. So dear friends, you all might be very, very clear about a very prominent case, in 1981, McDowell India versus Chief Commissioner of Income Tax. So in this case, the Chief Justice of India, Honorable Justice Ranganatha Mishra ji, so he, uh, you know, uh, gave a decision that the difference between tax planning and tax avoidance, there is a very thin line between these two. So here, under tax avoidance, we do not violate any rules and regulation. Rather, we take the advantages of loopholes which are available under the Income Tax Act 1961. And in tax planning, we take all legitimate benefits of income tax deductions, rebates, relief, exemptions, which are duly available under the Income Tax Act 1961. So if we minimize our tax liabilities by taking the loopholes which are available under Income Tax Act 1961, so here that can, enhance your blood pressure, because at any point of time, your case may be scrutinized. It, comes under scrutiny. So once your case comes under scrutiny, then, uh, almost permanently you are under the scanner of income tax department. And once you are identified that you are arranging your incomes in such a way
in order to minimize the tax liabilities where the split word is missing, and deliberately if you are involved in such sort of transactions, so your case can be scrutinized and you can put yourself under scanner for the whole of the life. So every time your income tax returns will be observed, your income tax return will be monitored very minutely, because for the income tax department you are a suspicious person, and they will go through your income tax return very minutely, because they know that the taxpayer is very smart, and without violating the rules and regulation of income tax act, the individual is in a position to minimize the tax liabilities. So this was, tax evasion, tax avoidance, and tax planning. Now, the Excuse me, sir. second important Excuse me, aspect, sir. Hello. yes, is there any question? Yes, sir. Sorry to interrupt you, sir, but I have a query, please. Yeah, Good evening, sir. My name is Chetan from DAV College, Abohar, Punjab. yeah. Sir, my question is, if you can plan the tax, if you can manage the tax, right? If you can avoid the tax, then still why all the people are inclined towards tax evasion rather than planning and avoiding the tax? Is the reason too much high rate of taxes or lack of knowledge or what? Chetan ji, you have raised very, logical and very rational questions. See, sometimes what happens, this may be because of lack of knowledge, or this may be, because of the higher rate of income tax. I tell you that when we study the income tax structure across the globe, so the rates of taxations are quite similar to our nations. The tax bracket of, the tax rates 10%, 20%, 30%. And even in advanced countries, I tell you the rates of tax are quite higher than our country. There the tax of rate of tax are 35%, 40, 44%, 45%. But yes, of course, tax rates, and then the second important aspect is tax slabs. So there the slabs are different. So here, because here we have a disparity of income in our country, right? So keeping in view the disparities of income, you know that 90% of Indian economy is in the hand of 10%, and vice versa, right? So when such is the scenario, when the disparity of income is such, in that case, progressive taxation is very, very meaningful in a country like India, where we have a progressive taxation, like, up to, if we talk about, the financial year 25-26, which is ongoing, right? So under the present financial year, income up to rupees 4 lakh is nil. And then as the income increases, rate of income tax also increases. 4 से 8 लाख रुपए तक हमारी जो इनकम टैक्स की रेट है वो 5% है। 8 से 12 लाख 10% है। 12 से 16 लाख 15% है। 16 से 20 लाख 20% है। 20 से 24 लाख 25% है, और उससे ऊपर 25%। And in this case, what we are trying to do is that those who are having better income, they need to pay the tax at a higher rate. And those who are in a lower tax bracket, they need to pay the income tax at a lower rate. So this is how, we try to justify. But at the same time, in case if the
tax structures and our taxation system is becoming very simpler, and if the government is trying to make it very simple so that the persons even who are not from the commerce and management background, and those even who are not from the taxation background, they can also understand the nitty-gritty and the implications of taxation in a same spirit in which the government is trying to inculcate them. Then, of course, this problem of tax evasion and tax avoidance can easily be sorted out. So this is a two-way sort of things which can be addressed from the taxpayer perspective, and which can be addressed from the government perspective as well. So got it, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Then the next important aspect to my friends is that we need to pay the income tax return. We have, ITR 1, we have ITR 2, we have ITR 3, and up to ITR 7. Now the question arises that whether we should file our income tax return under ITR 1 or ITR 2 or ITR 3 or ITR 4, 5, 6, 7. So this is a very basic question. So my answer to this question is very, very simple, that ITR 1 is applicable only for those individuals who are having income up to rupees 50 lakhs from salary income, from one house property income, interest income, and pension income. So please note it that only income from these four sources: income from salary, income from pension, income from interest, and income from one house property. So if income is up to rupees 50 lakh, ITR 1 will be applicable in order to file the income tax return as per Income Tax Act 1961. Now, the question arises that, say for example, if the income is above rupees 50 lakh, it's very simple that if income is above rupees 50 lakhs and a person, who is having income from business or profession, so in that case, instead of filing the income tax return under section ITR 2, ITR 3 will be filed. So if any person having any individual or any HUF, Hindu undivided family, having income more than rupees 50 lakh, and this 50 lakhs income is comprises of income from business and profession. जैसे ही आपकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन का कंटेंट आ जाएगा और इनकम आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और ITR 2 के केस में आपकी जो है, अगर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मोर देन वन हाउसेज से है, एक से ज्यादा हाउसेज से है, आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन उस इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे केस में हमें ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो I think now ITR 1, ITR 2, ITR 3, all are very, very clear to all of you. And in case if you do have any doubt, so you can ask. Yes, sir. Can I ask a question? Yeah. Ji, ma'am. So You mentioned HUF. What is HUF? What is the concept of HUF? yeah. May Actually, I know I'm your from name? language background, but I want to know. Yeah. Okay, may I know your name? You are Ujala. Sorry, I'm Ujala Shamnani. Yes. Okay, yes, But Ujala subject is ma'am. English. Yeah. Yeah.
I can easily understand that you are not from, commerce background. That is why, you are asking this question, because students from commerce background, they know the Hindu undivided family. In case, Hmm. if a joint family is living, right? So in Hmm. that case, Hindu undivided family, and that joint family is headed by the head of the family member. So in Hmm. that case, the income of that joint family is assessed. And Okay. on that income, the Hmm. liability of paying the tax to the government comes on the shoulder of the head of the family member, right? So here Correct. other individuals are not under the ambit of paying the tax to the government. Rather, the assessment is made not for individuals separately. Rather, the Hmm. assessment is made for the whole joint family, where Hmm. that joint family is represented or headed by the head of the family member. So that head Hmm. of the family member is representing the whole, undivided family, and whatsoever income arises on account of that undivided family, it is the karta. Karta means head of the family. It is the head of the Hmm. family who will be responsible to look into all aspects related to the taxation. He is liable to be assessed, and he is liable to make the payment of tax liabilities to the government. Is it Hmm. clear, ma'am? Okay. Yes, sir. Thank you, ma'am. Uh, now, the next very important aspect is that the rate of taxes for the current financial year, that is for financial year 25-26, as I have already told you, that income up to rupees 4 lakh is tax free, and from 4 lakh to 8 lakh it is 5%, 8 lakh to 12 lakh it is 10%, 12 to 16 it is 15%, 16 lakh to 20 lakh it is 20%, and 20 lakhs to 24 lakh it is 25%, and income above rupees 24 lakh is taxed at the rate of 30%. So here the rate of tax varies from 5% to 30%. So earlier these slabs were, maximum there were 3 slabs, but now these slabs have been enhanced from 3 to 5. That is 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, rather 6 and 24, above 24. So now here the question arises that the rebate under section 87A, it's very popular deduction under section 87A. So anybody having income up to rupees 12 lakh. So here you might be seeing that in case if anybody who is having income up to rupees 12 lakh, तो 4 लाख रुपए तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना. अगले 4 लाख पे, यानी कि 4 लाख से 8 लाख, अगले 4 लाख पे उसको 5% टैक्स देना है. तो 4 से 8 लाख की इनकम अपनी 4 लाख हुई, और उस 4 लाख के ऊपर 5% टैक्स हो गया 20,000. अब अगले 8 से 12 लाख, यानी कि फिर 4 लाख, तो उस 4 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा. तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000. तो इसका मतलब एनी बडी हैविंग इनकम अप टू रुपीज 12 लाख, तो उसको 40,000 प्लस 20,000, टोटल 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा. बट every individual is eligible to claim the rebate under section 87A up to rupees 60,000 if he or she is having income up to rupees 12 lakh. ये ध्यान रखना है कि उसकी इनकम 12 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा होते ही फिर जो है वो 87A की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा. लेकिन इसमें मैं 12.75 इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर हम सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स हैं तो सैलरीड क्लास को पहले 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, लेकिन अब इसमें न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 कर दिया है. सो देयरफॉर एनीबडी हैविंग इनकम अप टू रुपीज 12.75 lakh is not eligible to
मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, ही इज टैक्स फ्री 12,75,000 रुपए तक. So is it clear? That means the we can say, keeping in mind this rebate, that effective tax-free income limit is now 12,75,000. Am I right, Yes, sir? yes, very true, very true. Okay, sir. Is it clear, sir? Yes, sir. Yes. Okay, okay, okay. Then now we move to the next aspect. So next very important aspect is surcharge. So you all might be knowing that in case if the income is less than rupees 50 lakh, तो हमें जो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज बनेगी, we are not bound to make any amount of surcharge on the income tax liabilities which has been calculated as per the income tax slabs and income tax rates which are applicable for the financial year 25-26. लेकिन अगर हमारी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो उसके ऊपर हमें 10% सरचार्ज देना पड़ता है. और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सरचार्ज की जब हम बात करते हैं, सरचार्ज इज ऑलवेज लेविड ऑन इनकम टैक्स लाइबिलिटी, नॉट ऑन इनकम. राइट. तो जो हमारी इनकम के ऊपर हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बनेगी, फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो 60 लाख रुपए के ऊपर आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो है 4 लाख रुपए तक तो आपकी टैक्स फ्री हो गई, और अगले 4 लाख पे 5% आपका हो गया, 20,000 हो गया. अगले 4 लाख यानी कि 8 से 12 लाख, इस 4%, इस 40,000 पे आपका 10% 40,000 हो गया. फिर 12 से 16 लाख, इस 4 लाख के ऊपर 15% यानी कि 60,000 हो गया. फिर 16 से 20 यानी कि इस 4 लाख के ऊपर 20% यानी कि 80,000 हो गया. फिर 20 से 24, इस 4 लाख के ऊपर आपका 25%, 4 लाख का 25% 1 लाख हो गया. अब 24 से ऊपर, तो 24 से ऊपर हमारी कितनी टोटल इनकम 60 लाख है, तो 24 से ऊपर हमारी इनकम रह गई 36 लाख. तो इस 36 लाख के ऊपर हमें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 30 छिके 180, 18 30 ये 90 और 18 108. तो ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 10,80,000, 10,80,000. इतना ही हुआ ना. 36 लाख का 30%, 10,80,000. राइट. तो अब आपका ये टैक्स हो गया टोटल, आप इसको कैलकुलेट करो, 11 लाख हो गया और 12 लाख, 13 लाख, 13,80,000, 13,80,000. तो अगर मेरी इनकम 60 लाख रुपए है, तो 60 लाख रुपए के ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, मेरा टैक्स बनता है 13,80,000. तो क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो मुझे 10% सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा. तो इस 13,80,000 के ऊपर मुझे 10% सरचार्ज यानी कि 1,38,000. तो 1,38,000 ये ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया 15,18,000 आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज बनेगी. तो ये मैं सरचार्ज प्रोविजन भी आपको इसलिए बताना चाहता था कि आपको ये मालूम रहे कि इन केस किसी भी कीमत पे अपनी इनकम को कोशिश करो अपनी टैक्स प्लानिंग करने की इस तरीके से कि इनकम 50 लाख रुपए को क्रॉस करने से आप उसको बचा सकें, ताकि आप सरचार्ज के प्रोविजन से बच सकें. और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए के बीच में है, तो सरचार्ज की रेट जो है वो 10% की बजाय 15% हो जाएगी. और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में सरचार्ज की रेट जो है वो 25% एप्लीकेबल हो जाएगी, अगर हमारी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है. तो इसलिए ये चीज हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपनी प्लानिंग इस प्रकार से कर सकें कि हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े.
Then another is another important aspect is you all might be Excuse me, sir. very yeah. सर टैक्स स्लैब्स तो आपने सारे बहुत अच्छे से समझा दिए, थोड़ा टैक्स सेव करने के बारे में बता दीजिए। टैक्स सेव करने के बारे में भी बता रहा हूँ मैम। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम है। कितना टाइम है हमारे पास? अभी 20 मिनट और है ना? यस सर। 20 मिनट में आपको मैं सारे तरीके बता दूंगा कि कैसे टैक्स बचाना है ना? क्योंकि अगर आपकी मैं टैक्स नहीं बचा पाया तो शायद मेरा लेक्चर देने का पर्पज डिफीट हो जाएगा मैम। तो इसलिए आई विल एंश्योर दैट ईच एंड एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर इन राइट स्पिरिट। अब आप लोग मैंने आपको 87A के बारे में बात किया कि 87A की जो रिबेट है, दिस रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज इंडिविजुअल्स whose income does not exceeds 12 lakhs और 12.75 lakh, राइट? तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जो एनआरआई होते हैं, आर दी एनआरआई एलिजिबल फॉर क्लेमिंग दी रिबेट अंडर सेक्शन 87A? नो, दिस इज फॉर इंडियन रेजिडेंट्स ओनली। तो जो हमारे इंडिया में इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 3 प्रकार का होता है: रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, उनके लिए 87A की रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली फॉर द रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स इन इंडिया। अब आपको मैं एक चीज और आपसे मैं आगे शेयर करूंगा, पेंशन के बारे में और फैमिली पेंशन के बारे में। तो जो हमारी पेंशन होती है ना, तो पेंशन जो हमारी कैलकुलेट होती है, जो डिटरमिन होती है, वो 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो हमारी बेसिक पे होती है उसका 50% प्लस डीए। डीए जिस रेट से होता है, जितना होता है उस रेट से। This is all about pension. Pension is calculated 50% of last drawn basic pay plus DA, जो भी उस टाइम पे डीए एप्लीकेबल होता है, 10%, 20%, 30%, whatever. And then the family pension. Now the question arise कि पेंशन में और फैमिली पेंशन में अंतर क्या होता है? पेंशन जो मिलती है वो पेंशन इज मेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट? जब हम रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती है। और पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 50% ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए। अब वो एम्प्लॉय जो है एक्सपायर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उस एम्प्लॉय की फैमिली को जो पेंशन मिलेगी उसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। और जो फैमिली पेंशन होती है वो फैमिली पेंशन हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई है, तो उसकी लास्ट ड्रॉन जो बेसिक पे है उसका 30% प्लस डीए। तो ध्यान रखिए, फैमिली पेंशन के केस में 30% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए, और पेंशन के केस में 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डीए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या फैमिली पेंशन में भी कोई वो मिलती है क्या, डिडक्शन मिलती है? यस, फैमिली पेंशन के केस में पहले 1/3 और 15,000 विच एवर वाज लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। बट अब जो है इसको न्यू टैक्स रेजिम में 15,000 की बजाय 25,000 रुपए कर दिया है। 1/3 और 25,000, 1/3 ऑफ द पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। तो ये इसकी सीलिंग को जो है वो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कोई ऐसी भी सरकमस्टेंसेस ऐसी आ सकती है कि गवर्नमेंट आपकी फैमिली पेंशन को रोक ले? तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फैमिली पेंशन को रोकने का अधिकार है गवर्नमेंट को? यस, गवर्नमेंट कैन stop it in case
अगर आप जो पेंशनर है उस पेंशनर के ऊपर कोई बहुत सीरियस एलिगेशन और वो कन्विक्ट हो जाता है तो उस केस में फैमिली पेंशन को भी जो है स्टॉप किया जा सकता है। अब बहुत एक मैं आप लोगों के साथ अच्छी चीज जो शेयर करना चाहता था वो ये थी कि अब हमारे पास सभी कंफ्यूज रहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। तो ये क्वेश्चन जब भी मैं कहीं पे भी लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाता हूँ तो मेरे से इस के ऊपर जरूर पूछा ही पूछा जाता है। हर जगह ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सीधा सीधा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसको फॉर्म 10(1)(e)(a) भर के देना पड़ेगा और उसको अपनी रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट ही फाइल करनी पड़ेगी। तो ये दो कंडीशन है ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, दैट वन हैज टू file the income tax return within the due date, and that too he will have to submit form 10(1)(e)(a) to go for filing the tax return under old tax regime। अगर कोई ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना भूल गया, उसने रिटर्न फाइल की ही नहीं, तो ड्यू डेट के बाद उसके पास ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करने का कोई स्कोप अवेलेबल नहीं है। ड्यू डेट के बाद उसको न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो एक तो ये ध्यान रखना कि अगर, और अब आप एक प्रश्न ये भी पूछेंगे कि सर हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न फाइल करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रेजिम में, विच वन इज बेनिफिशियल। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है। हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में बी बेनिफिशियल फॉर वन इंडिविजुअल बट मे एंड मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द अदर इंडिविजुअल। So it totally depends upon the structure of the income, that what composition of your income is there. So in case if you are involved and if you have subscribed many policies, आपने बहुत सारी रिटर्न क्लेम करते हैं, आप सेक्शन 80G डोनेशन की भी क्लेम करते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की भी करते हैं, आप 80C की भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, आप 80D की भी करते हैं, डबल डी की भी करते हैं, 80U की भी करते हैं, बहुत सारी डिडक्शंस आपने इनवाइट की हुई हैं, आपने बहुत सारी पॉलिसी सब्सक्राइब की हुई हैं। तो अगर इफ सच इज द सिनेरियो तो उस केस में आपको जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना बेनिफिशियल हो सकता है। बट इफ such is not the case and if you feel that you have very limited scope of subscribing these policies which I have already discussed, so in that case straight away you can go for the new tax regimes where you are enjoying the benefits of wider tax slabs and lower tax rates. So both the benefits can be taken at the same time when we do not invite any sort of obligation as far as subscription in different sort of policies are concerned. So is it clear to all of you? ओल्ड टैक्स रेजिम में तभी जा सकते हैं जब हम ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करें, और उसके लिए सेकंड कंडीशन ये है कि हमें अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही इंटीमेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी टैक्स रिटर्न ओल्ड रेजिम में फाइल मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो उसके लिए आपको फॉर्म 10(1)(e)(a) भर के अपने एम्प्लॉयर को ईयर के स्टार्टिंग में ही सबमिट करना पड़ेगा। तो उस केस में आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आप ड्यू डेट तक नहीं भर पाते हैं तो उसके बाद तो आपको ड्यू डेट
पे नहीं भर पाएंगे तो आपको एक तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की भी मार पड़ेगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और तीसरी मार ये पड़ेगी कि आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो दीज आर दी 3 consequences if the income tax return is not filed within the due date। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई लापरवाही एक्सपेक्टेड नहीं है। यू ऑल आर वेरी मैच्योर, यू ऑल आर वेरी अटेंटिव। तो अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, टाइम पे ही भरिए। और इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल के लिए। और अगर ये नॉन ऑडिट के केस में है, और अगर ऑडिट का केस है तो उस केस में फिर 31 अक्टूबर होती है। तो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर को ध्यान रखिए। आप अगर नॉन ऑडिट के केस में वेयर ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड तो 31 जुलाई तक भर सकते हैं। एंड इन केस इफ योर इनकम स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट audited, in that case you can file the return up to 31st of October। अब एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये भी है कि अगर आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप यू आर साइलेंट, आपने कुछ नहीं बताया कि आप अपनी जो रिटर्न फाइल करेंगे वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत करेंगे या न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यू टैक्स रेजिम है, न्यू टैक्स रेजिम इज कंसिडर्ड एज ए डिफॉल्ट रेजिम। तो ऑटोमेटिकली जो है यू विल बी लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। फिर आपको जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत फाइल करने की आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, ठीक है। और अब एक जो अगली इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आप लोगों को सबको मालूम होनी चाहिए कि अब जो हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट है वो थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपए है कि नहीं? 5 लाख, सॉरी 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। तो इन सच केस थ्रेश होल्ड लिमिट हमारी 4 लाख हुई। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए तक है तो क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? तो अगर आप मेरे से एक्सपर्ट ओपिनियन पूछते तो हाँ बिल्कुल उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, उसको फाइल करना चाहिए, ताकि अगर उसको फ्यूचर में कोई भी लॉस हो जाता है तो उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की जो है अपनी उसको वो एडवांटेज मिल सके। अदरवाइज अगर आप 4 लाख रुपए तक इनकम है, रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और आपको फ्यूचर में आपके अपने बिजनेस से किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है तो जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो प्रोविजन है तो आप अपने उस लॉस को एक इंटर सोर्स हेड इनकम होती है, उस इंटर सोर्स हेड इनकम से आप अपने लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, तो जो रिमेनिंग लॉस रह गया उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करने का भी राइट नहीं रखते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए कि भाई मेरी तो इनकम ही 4 लाख रुपए से कम है, देन व्हाई शुड आई फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, और कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 4 लाख रुपए की, अब तो आपकी इनकम 4 लाख रुपए या 4 लाख रुपए से कम है तो अब अपनी आप इस इनकम को कम से कम एक नंबर में तो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास एक नंबर का पैसा क्रिएट होता है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से डरिए मत और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी चल रहा होगा कि जब न्यू टैक्स रेजिम आ ही गया है और न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट सभी डिडक्शन जो है वो विड्रॉ कर ली हैं हमारी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन की है, एटीसी की डिडक्शन है, एटीडी है, डबल डी है, डबल डीबी है, एटी एल है, एटीटी है, एटी डबल टी है, एटीयू है, ऑल डिडक्शंस हैव बीन विड्रॉन। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब कोई डिडक्शंस बची ही नहीं न्यू टैक्स रेजिम में, हमें न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो अब अपनी आप इस इनकम को कम से कम एक नंबर में तो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास एक नंबर का पैसा क्रिएट होता है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से डरिए मत और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी चल रहा होगा कि जब न्यू टैक्स रेजिम आ ही गया है और न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट सभी डिडक्शन जो है वो विड्रॉ कर ली हैं हमारी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन की है, एटीसी की डिडक्शन है, डबल डी है, डबल डी है, एटी एल है, एटी डबल टी है,
तो फिर हम टैक्स प्लानिंग क्यों करें, हम अपनी टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस को समझने की तकलीफ क्यों उठाएं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तकलीफ हमें इसलिए उठानी चाहिए कि स्टिल इवन the new tax regime has taken place, but even after, there are deductions which are still applicable even after the applicable of new tax regime. The first one is standard deductions of rupees 75,000. तो ये सैलरीड क्लास को मिलती है, और पहले ये जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 था, सॉरी 24-25 था, तो उसमें भी हमारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 50,000 थी। तो अब ये डिडक्शन जो है वो सैलरीड क्लास के लिए 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिए। सो दिस deduction of rupees 75,000 to salaried class individual is still applicable. Then the second important deduction which is still applicable under the new tax regime is फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन के केस में पहले जो डिडक्शन एप्लीकेबल थी वो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए जो दोनों में से कम हो वो डिडक्शन मिलती थी। लेकिन अब जो है न्यू टैक्स रेजिम में इसको और इंप्रूव कर दिया है और एनहेंस कर दिया है। नाउ द फैमिली पेंशन इज 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। तो आपको जो है 25,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है फैमिली पेंशन के केस में मिल सकती है। देन द थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। पहले जो केस में क्या होता था कि अगर इवन हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं भी करते हैं, इट इज एप्लीकेबल स्टिल इन केस ऑफ जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। उस केस में भी अगर हमने उस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते थे तो उसकी हमें पहले 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती थी, लेकिन बाद में उसको एनहेंस करके 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया था, तो 2 लाख की डिडक्शन मिलती थी। लेकिन अब न्यू टैक्स रेजिम में इंटरेस्ट ऑन लोन, होम लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, तो हमारा जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस था, तो अब वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए अगर हमने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो डिडक्शन अब सेक्शन 24 में एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन टेकन फॉर द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, हमने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, किराए पे उठाया हुआ है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी के केस में हमने जो लोन लिया हुआ है उस लोन के ऊपर जो है the entire amount of interest is eligible under the deduction under section 24 of income tax act 1961। तो इसमें जो 2 लाख रुपए वाली लिमिट थी वो लिमिट केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए थी। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ही 2 लाख रुपए तक की हम इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी विच आर लेट आउट, so in that case there is no maximum ceiling, there is no maximum limit as far as interest on loan under section 24 is concerned, deduction of interest on loan under section 24 is concerned। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चौथी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप काफी सारे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी 2004 ऑनवर्ड्स हुआ होगा। तो जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में 1 जनवरी 2004 ऑनवर्ड्स हुआ है उनके लिए ओपीएस का प्रोविजन नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। एंड फॉर ऑल दोज एम्प्लॉइज गवर्नमेंट has introduced, sorry ma'am, government has introduced NPS, new pension scheme, for the employees who have been employed on 1st of January 2004 onwards। तो उस केस में जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, तो एनपीएस में क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 10%
और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 14% इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. So under NPS, employee is required to make the payment of contribution at the rate of 10% on basic pay plus DA, and employer is required to make the payment of contribution at the rate of 14% on the behalf of the employees on basic pay plus DA. तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% होता था बेसिक पे प्लस डीए का, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है. तो टोटल जो है 24% कंट्रीब्यूट होता है. 10% एम्प्लॉय का, 14% एम्प्लॉयर का, और ये टोटल 24% जो है एम्प्लॉय के अकाउंट में कंट्रीब्यूट हो जाता है. और ये जो है फिर बाद में लमसम अमाउंट इसका मिलता है. तो अब जो पहले हम अंडर सेक्शन 80C जो एम्प्लॉय का और जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता था, वो दैट कंट्रीब्यूशन वाज एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. तो इस केस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन, अगर केवल एम्प्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन है तो उस केस में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हो सकता है इन ए फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C वो 1,50,000 रुपए तक की उसको डिडक्शन मिल सकती है, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता. बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जो रेस्ट्रिक्शन है वो केवल एम्प्लॉय के केस में है. तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर आपको जो वो मिलती है, क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलती है. तो अंडर सेक्शन 80C की जो डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉयर के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दिस रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, नॉट फॉर द एम्प्लॉयर. तो ये 4 डिडक्शन जो है, दीज 4 डिडक्शंस आर स्टिल एप्लीकेबल इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम. अब 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते होंगे टीडीएस, आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे टीडीएस एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपको इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए. अदरवाइज आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटीज पे करनी पड़ सकती है. तो टीडीएस जो होता है, TDS हमेशा, TDS is always made by the employer. Employer while making the payment to the employee, employer deducts the amount of TDS, tax deducted at source. कि अगर मान लो मेरी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है, इट इज हिज लायबिलिटीज टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ माय सैलरी टू मी. तो एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा टीडीएस डिडक्ट करता है, और जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जो टैक्स काटता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ से, तो एम्प्लॉयर को वो टैक्स किसको जमा कराना पड़ता है? गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, राइट. But advance payment of tax is entirely different. Advance payment of tax is basically, applicable for the self individual. जो self individual है वो अपनी इनकम का एस्टिमेट करता है कि मेरी वो जो इनकम है वो बेस्ड ऑन हिज पास्ट ट्रेंड एंड बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम विच आर अवेलेबल विद हिम. तो उसको ये आइडिया रहता है कि हाँ, मेरी इनकम जो है इस साल में, पिछले साल इतनी थी तो इस साल मेरे ये रेवेन्यू और जनरेट हुए हैं, तो इस वजह से पिछले साल अगर 5 लाख थी तो इस साल मेरी इनकम 6 लाख रुपए हो सकती है, या 7 लाख हो सकती है, या 50 लाख हो सकती है. तो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन है इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है, और उस बेस टोटल एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाती है. तो उस टैक्स लायबिलिटीज का, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटीज 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है, तो उस केस में अगर 10,000 रुपए तक बनती है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए आपको एडवांस में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको ये लगता है भी इनकम, हमारी एस्टिमेटेड इनकम ज्यादा है और हमारी टोटल उस इनकम के ऊपर
टैक्स लाइबिलिटीज हमारी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है, तो उस केस में आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। और वो कैसे करना पड़ेगा? जितनी टैक्स लाइबिलिटीज आपकी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए, तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए बनती है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको एडवांस पेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी टैक्स लाइबिलिटीज 10,000 रुपीज से ज्यादा है। अब एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटीज है उसका 15% जो है आपको 15 जून तक पे करना पड़ेगा। 15% जो है वो 15 जून तक, यानी कि 1 लाख का 15% कितना हुआ? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आपको 15 जून तक पे करने ही पड़ेंगे। और फिर 15 सितंबर तक आपको अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज का 45%, यानी कि आपने 15,000 तो पहले पे कर दिए थे और 30,000 रुपए और, तो अब यानी कि 15 सितंबर तक टोटल आपको 45% पे करना है। तो 45% हो गया, क्योंकि 15,000 रुपए आपने 15 जून तक कर दिए थे और अब 15 सितंबर तक 30,000 और कर दिए, तो टोटल 45% हो गया। अब 15 दिसंबर तक 75%, so 75% of total tax liabilities up to 15 December. So the individual has already paid 45,000 and 75% of total tax liabilities comes 75,000. So out of 75,000, you have already remitted 45,000. So another 30,000, the individual is required to make the payment of tax by 15th of December. And then up to 15th of March next year, the employee is required to make the 100% of tax. इसका मतलब यह है कि वो 75,000 रुपीज पे कर चुका है, तो उसको अनदर 25,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रोविजन बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, अदरवाइज इट मे लैंड ऑल ऑफ अस into a big problem. So in order to avoid all such intricacies, we need to be very active, we need to be very proactive, we need to be very vigilant, we need to be very alert. So in case if such provisions are taken into consideration in a latter end spirit, in a positive spirit, I am pretty sure that the tax liabilities of individual can be minimized to a greater extent, which will ultimately be in the larger interest of all of us. So thank you very much for giving me, this great opportunity to be the part of this great academic exercise where I got the opportunity to share my viewpoints to all the youngsters. And the future of our country totally depend on the young shoulder. And I am pretty sure that those who are the part of this great academic exercise, they will certainly take the pledge to take the country forward. Thank you very much, ma'am. Okay, thanks. Thank you very much, sir, for this fruitful lecture. We came to know everything about the NPS, OPS, and all tax, how to save the tax, as Pooja Sharma ji asked. And now I invite Chetan Ahuja ji for formal feedback. Yes, Chetan Ahuja ji. Hello everyone. First of all, I want to thank our coordinator ma'am, Sangeeta ma'am, for giving me the opportunity to express this note of appreciation. Thank you, ma'am. Sir, without any doubt, it was a highly informative and engaging session. Your clear explanation of tax planning, tax avoidance, and tax evasion helped us build a strong conceptual foundation. And the way you covered different ITR forms like ITR 1, ITR 2, ITR 3, etc., along with the applicable tax rates and the difference between the old and new tax regimes, it was really extremely useful, sir. And your guidance on the benefits of filing ITR even when you have zero tax liability also added great practical value. And the way you delivered your lectures, sir, in very simple explanation, it benefited the persons from non-commerce background also. So it was very enriching, very valuable session, sir. On behalf of MMTTC organizers, on behalf of Director MMTTC, on behalf of coordinator, and on behalf of all the participants, I thank you so much
for such a valuable and enriching session, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I can conclude that the purpose of interacting. I will not say that it was delivering a lecture. It was basically an interaction with the young mind and young talent. So now I am pretty sure that you have made it a point that those even who are not from commerce background, they have been benefited a lot. So it means my purpose is achieved. So I am Yes. very happy the way you listened to my talk, the way you responded, and I am pretty sure that this will certainly extend benefits to all of the participants. Sir, Thank there you. are two more participants who want to give their feedback. Can Okay, I ma'am. invite them, sir? Yes, yes, yes. So, Nishta Petterji, are you there, Nishta ji? I'm there, ma'am. Am I audible? Hello? हाँ जी ma'am, please continue. Ji. First of all, I'd like greeting everybody a very good evening. Sir, it was undoubtedly an insightful session. I'm from the Department of Economics. So for me, all the more it was nostalgic listening to everything that you said. But then undoubtedly, all of us would like thanking you for making the concepts clear to the core and also in making us understand such an important and relevant topic which undoubtedly holds importance for each one of us and clarifying it in the best of manner. Thank you so very much, sir. We are grateful to have had you today in our session. Thank you. Thank you, Nishtha ji. Sir, can you please switch on your video so that we can take a screenshot with you, sir? Madam, I made blunder. So throughout the session, my video was Sir, I think you switch off the video because of the network bandwidth. So I do not मुझे interrupt मैम you in between. बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैंने कब इसको स्विच ऑफ कर दिया या अपने आप हो गया. I am very poor in technology, ma'am. I am really very sorry for that. But you are rich in knowledge, sir. You are rich in your field, sir. नहीं, Sir, ma'am. sir, now I am inviting Vishwa Sant Kumar ji for his feedback. Sir, हेलो सर, please. गुड हाँ इवनिंग जी. सर. सर आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बारे में और कितने % मोर देन पेमेंट करना पड़ता है. सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी. कि सर जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न जब लेते हैं या क्लेम करते हैं तो वो दूसरे के माध्यम से भराते हैं, तो वो सही है या गलत हम लोग नहीं देख पाते हैं, या फिर इनकम टैक्स फाइल दूसरे के माध्यम से कराते हैं, वो फाइल हम लोग को खुद करना चाहिए सीख कर या फिर दूसरे से करा सकते हैं? अगर हम लोग कराते हैं, इनकम टैक्स क्लेम करते हैं जो रिटर्न पैसे टैक्स भर कर, तो वो सही है या गलत सर? So, okay, good to know about your very interesting question. देखिए ऐसा है कि चाहे आप इनकम टैक्स खुद रिटर्न फाइल करें या किसी एक्सपर्ट से रिटर्न फाइल कराएं, मैटर ये करता है कि हाउ इफेक्टिवली यू कम्युनिकेट योर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द एक्सपर्ट्स फ्रॉम whom you are going to get your income tax return filed. राइट अगर आप अपनी इनकम के सोर्स ही उनको प्रॉपरली नहीं कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, तो फिर वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू कम्युनिकेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इनकम होती है, सो दैट ही कैन एक्सटेंड ऑल पॉसिबल बेनिफिट्स विच आर available under the Income Tax Act 1961 for which you are entitled into, right? Number one. Number two, आजकल सारी की सारी चीजें, क्योंकि जो एनुअल इनकम स्टेटमेंट है AIS है, पहले 26 AS होता था, तो अब 26 AS की जरूरत ही नहीं है. सारी चीजें ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं. ईच एंड एवरी transactions of your income is already reported under annual income statement AIS. So therefore you need not to have any sort of documentary evidence. Automatically it will automatically be taken care while filing the income tax return through online, right? तो इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है. कोई आपसे कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन आपका स्किप हो गया. बट यस, जो भी आपकी, अगर इफ इन केस इफ यू ऑप्ट फॉर old tax regime,
then yes, of course, any amount of policies which you have already subscribed, so you must communicate all those policies which you have subscribed to your tax expert, so that he can provide you the maximum tax advantage which are available under the Income Tax Act 1961. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other participant? Yes, question from any other participant? Now I invite Vishwa Sant Kumar ji. Are you there for presenting your feedback? Okay. Now Prateek Bhai ji. Prateek ji. Sir, I think they are, my voice is not audible to them. So, sir, on the behalf of Shefali ma'am and all the participants, sir, I am thanking you again. Sir, lecture was so much useful for us teachers and working in this field, because we all should know about our NPS system, OPS system, Tier 1 to 3, how to apply, how the penalty will release, and every knowledge you give us, share with us, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am, for giving me this great opportunity. I, on my personal behalf and on the behalf of my university, that is South Asian University, extend my sincere thanks for, giving this such a beautiful and wonderful opportunity. So I look forward to have such opportunity in the time to come as well. You are always Thank you, welcome, sir. sir. Thank you. sir. Thank you, All sir. of you. Thank you, please. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, So, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. good day, all the participants. So, we will meet again tomorrow Same to you, ma'am. before Yeah. 10 minutes before 10 a.m. so that we can The prayers. sing a prayer. Okay. Okay, Thank ma'am. you. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.